20 जुलाई सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, I will consider everybody. You first take your seat. I will consider everybody. When everybody is shouting, how I can consider anyone? Honorable members, on this 26th of July, the nation will observe Kargil Vijay Diwas to commemorate India's victory in the Kargil War of 1999 and to honor the brave officers and soldiers of our armed forces who defended the sovereignty and territorial integrity of our nation with exemplary courage, valor, and unwavering devotion to duty. On this occasion, this House pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces whose indomitable courage, steadfast determination, and selfless dedication in the face of extraordinary challenges continue to inspire the nation and reaffirm our collective resolve to uphold the unity, sovereignty, and integrity of the country. I am sure the members of this House will join in paying our respectful homage to the brave martyrs. I request the members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the martyrs. Om Santi Santi Santi. Honorable members, an orientation program for the benefit of the newly elected members is being organized on Saturday and Sunday, the 25th and 26th July of 2026. The program has been designed to familiarize the newly elected members with the practices, procedures and conventions of the House and to enable them to make effective use of the various parliamentary devices available to members in the discharge of their parliamentary responsibilities. I am sure that the programs will be of immense benefit to the newly elected members. I would urge all the members to take full advantage of the valuable insights it offers into the functioning of the House. Papers to be laid on the table. श्रीमान जितिन प्रसादा जी. श्री महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं. श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी. सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यवाही क्रम संख्या 1 ख पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र को सदन के पटल पर रखता हूं. Dr. L. Murugan ji, on behalf of Dr. Chandrasekhar Pemmasani ji. Respected Chairman Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Dr. Chandrasekhar Pemmasani, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 1 class C of today's revised list of business pertaining to the Ministry of Rural Development. Thanks. Shriman V. Somana ji, on behalf of Shriman Ravneet Singh ji. Respected Sir, on behalf of my colleague Sri Ravneet Singh, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 1D in today's revised list of business. Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports. Shriman Kanshyam Dewari ji. माननीय सभापति महोदय, मैं विभाग संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूं. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुदान मांगे 2025-26 के संबंध में 365वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों
सम्मुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 379वां प्रतिवेदन। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCETE के कार्यकारिणी की समीक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षकों की क्षमता विकास पर दिए गए विशेष बल के आलोक में अध्यापक प्रशिक्षण हेतु की गई पहल संबंधी 368वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों सम्मुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 380वां प्रतिवेदन तथा शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदान मांगे 2025-26 के संबंध में 364वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशें सम्मुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 381वां प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन 16 जून 2026 को राज्यसभा के माननीय सभापति को तो प्रस्तुत किए गए थे जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था, और उसी दिन उन्हें लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को अग्रेषित कर दिया गया था। राज्यसभा के माननीय सभापति ने इन प्रतिवेदनों को प्रकाशित और परिचालित करने के आदेश दिए। धन्यवाद। Statements of the Public Accounts Committee, श्रीमान अखिलेश प्रसाद सिंह जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में अंतर्वेश सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों को सभा पटल पर रखता हूं। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर, श्रीमान वी सोमन्ना जी। Respected sir, on behalf of my colleague Sri Ravneet Singh, I rise to make a statement on the status of implementation of recommendation contained in the 8th report of the Standing Committee on Railways, 18th Lok Sabha. On demand for grant for 26-27, the Ministry of Railways laid in Rajya Sabha on 10/3/26. A statement showing implementation status of all the recommendations contained in the report is enclosed. Since the statement is voluminous, I request that the same may be taken as read. Statement regarding government business, Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business for the week commencing Monday, the 27th of July 2026 will consist of: number 1, consideration of any items of the government business carried over from today's order paper. It contains introduction, consideration and passing of the Prevention of Insults to National Honor Amendments Bill 2026. Now, Consideration and return of the Supreme Court. nothing will number of go on judges regard amendment except to bill the ministers. 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and passing of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 after its introduction. No. Consideration and John return of the Peterji, you take your appropriations seat, bill I will come to you. relating to demands for excess grants for the year 2022-23 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. Thank you, sir. Now, matters raised with permission. सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने हम सभापति जी 20 जुलाई सोमवार पे छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज We have will meet at 12 उससे मेरा मन दुखा।